Okay, so in this lecture, we are going to discuss the last some points like, with respect to the preclinical trials or preclinical studies. We have already discussed this topic like in two lectures in much detail. So we will just summarize about the preclinical studies in this lecture. Okay, so what we have summary is like this, and this preclinical research is indispensable. So despite all efforts to identify relevant animal models to ensure a significant translational value, drugs often show different pharmacodynamic characteristics when administered to human subjects. Okay, and this point we already know that whatever the studies we are going to do in animals, that doesn't certify that this drug will give same results or same amount of therapeutic effect in the human beings, because it is completely different. The physiology of human being and animals is completely different. There is a much more genetic difference in between humans and various animals. So when we carry out the studies on animals, so it doesn't give assurity about the same effect to be occurred in the human beings. Second point, thus merely 1 out of 5 investigational drugs tested in clinical trials eventually gains approval for clinical use. And therefore this is the knowledge that we have to get. That means we have to have much more molecules. That means it is not like that ki one molecule got tested and shown very good results in preclinical trials, and that molecule only will show good results in human beings. It is not like that. We should have at least 5 to 10 molecules in our basket which will be tested in the human beings or in clinical trials. Third point, some studies even report that only 9% of compounds passing preclinical efficacy evaluation are approved by the FDA. So you can just see the amount of molecules getting approval. Okay, so only 9% of compounds, means suppose 100 molecules have passed the preclinical trials, and out of these 100 molecules only 9 molecules have been approved by FDA. That means about 90% of the molecules, about 90% of the molecules got rejected. That means even if the drug is showing very good safety studies and efficacy reports in animals, that does not give us assurity about the results in human beings. Therefore, we should have many more molecules with us, so that if one molecule is not showing appropriate results in human beings, we can use another molecule. Next point is that the fact that most anti-cancer drugs do not pass efficacy evaluation in phase 2 and phase 3 studies suggests that currently used preclinical models fail at appropriately mimicking tumor heterogeneity, host factors, and drug resistant mechanisms. Now, what is the meaning of this sentence? Is like the most of anti-cancer drugs. Okay, so before uh, developing or discovering the drugs for the treatment of cancer, first of all we have to prove, like any other drug, its safety. If it is completely safe, 100% safe, then and then only that drug can be used for the treatment of that particular disease. Now what is happening with these anti-cancer drugs? So these anti-cancer drugs does not pass efficacy evaluation in phase 2 and phase 3. Why we are discussing about phase 2 and phase 3 here? Due to which, because we generally study about the efficacy data. We generally study about the efficacy data in phase 1. Okay, along with that we have to give more focus on safety data. That means what? The efficacy will be predominantly studied in phase 2 and phase 3.
But what happens in phase 1, we will just try to prove the safety of drug in human beings. Therefore, if you remember, we always consider healthy human individuals in phase 1 of clinical trials. मतलब क्या है, जब हम phase 1 clinical trials स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स नहीं होंगे जिनको कैंसर है, ऐसे पेशेंट्स होंगे कि जिनको कैंसर नहीं है। तो हम हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स लेते हैं फेज 1 में। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले इफिकेसी तो हम देखने वाले हैं, लेकिन इफिकेसी के साथ साथ हमें पहले क्या करना है, वी हैव टू प्रूव द सेफ्टी ऑफ दैट कंपाउंड इन द हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स। तो सेफ्टी स्टडीज पास हो जाने के बाद हम जाएंगे फेज 2 एंड फेज 3, जहां पे एक्सटेंसिव इफिकेसी इवैल्यूएशन होने वाला है। Therefore, these anti-cancer drugs generally does not pass efficacy evaluation in phase 2 and phase 3 studies, and ये सजेस्ट करता है कि जो एंटी कैंसर मॉडल्स हमने डेवलप किए हैं, है ना, मतलब एंटी कैंसर एक्टिविटी चेक करने के लिए हमने जो एनिमल मॉडल्स डेवलप किए हैं वो आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मिमिक द कंडीशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब ह्यूमन बीइंग्स में कैसी कंडीशंस होंगी, कैसा जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा, कौन से फैक्टर्स होंगे, तो ये सारे फैक्टर्स एनिमल्स में होंगे ये जरूरी नहीं है। देयरफॉर हम जो एनिमल मॉडल्स यूज करते हैं वो एनिमल मॉडल्स एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स शो नहीं करते। इसीलिए मैंने आपको पिछले 1-2 लेक्चर्स में बताया था कि आपको अगर फार्माकोलॉजी में एमफार्म करना है या फिर रिसर्च करना है, जैसे आपको जेआरएफ का मैंने ऑप्शन बताया था आपको, क्या आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप ज्वाइन कर सकते हो कहीं पे, CSIR है, DST वगैरह है, AICT है, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस भी है कि जहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं और उन प्रोजेक्ट्स के लिए उनको मैन पावर चाहिए। तो आप बी फार्म के बाद और एम फार्म के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो JRF के लिए। जनरली एम फार्म लगता है, एम फार्म प्लस जीपैट क्वालिफाइड अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जीपैट जिनका क्लियर है उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है। इवन RC पटेल में भी अगर प्रोजेक्ट्स आते हैं फार्माकोलॉजी के लिए तो वहाँ पे भी वैकेंसीज बहुत बार होती है ना। जो CR पाटिल सर है RC पटेल में, तो उन्होंने अभी तो नहीं, वो अभी तो छोड़ के चले गए, लेकिन जो भी फैकल्टी है वहाँ पे अगर वो प्रोजेक्ट अगर डिमांड करती है, कोई फंडिंग एजेंसी से फंड अगर रेज करता है उनको, तो प्रोजेक्ट्स होते हैं और आप वहाँ पे एज जूनियर रिसर्च फेलो ज्वाइन कर सकते हो। तो यही बात है, क्योंकि यही सेंटेंस बार बार आता है कि प्री क्लिनिकल मॉडल्स जो होते हैं वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स शो नहीं करते। तो हो सकता है कि आप लोग कोई ऐसा मॉडल डेवलप कर लो कि वो किसी रिसर्च के लिए आगे यूज हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी पायरेटिक है, एंटी डायबिटिक है, ऐसे बहुत सारे एनिमल मॉडल्स डेवलप करके रखे हुए हैं। तो आपको अगर चाहिए तो आप रिसर्च करके कोई एक नया मॉडल डेवलप कर सकते हो। ठीक है। Second last point, nevertheless, preclinical research is indispensable to protect human subject in clinical trials. Obviously, हम देखते हैं कि अगर ये ड्रग एनिमल्स में सेफ नहीं है, अगर हमने डोज दिया है एनिमल्स को और एनिमल्स की अगर डेथ हो रही है, तो ऑब्वियसली दैट ड्रग इज नॉट गोइंग टू बी एडमिनिस्टर्ड इन टू द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो ये हमें एक एश्योरिटी देगा कि एटलीस्ट चलो ठीक है, ये ड्रग अगर इफेक्टिव नहीं है तो वो सेफ तो है कम से कम। मतलब ये ड्रग लेने के बाद चाहे वो डिसीज का ट्रीटमेंट हो ना हो, लेकिन उस ड्रग से उस पर्सन का डेथ नहीं होने वाला है। And finally, adequate design of preclinical studies and careful choice of model systems are vital to ensure relevant results that translate into applicability in clinical settings. तो जनरली हम जो भी कोई करने वाले हैं, फार्माकोडायनामिक्स से लेके फार्माकोकाइनेटिक्स, टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग्स एटसेट्रा, तो ये सारी टेस्टिंग्स हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि ये कैसे रिजल्ट्स हमें ह्यूमन बीइंग्स में देने वाले हैं। नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम एक जज कर सकते हैं कि हम किस तरह से इस पर्टिकुलर ड्रग को ह्यूमन बीइंग्स में एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। एटलीस्ट हमें फार्माकोडायनामिक्स जो है, मतलब उसका जो
मोड ऑफ एक्शन वगैरह है वो हमें पता चलता है, अदर सिस्टम्स पे क्या इफेक्ट होगा वो हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर एंटी कैंसर ड्रग है तो एंटी कैंसर ड्रग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा, लंग्स पे क्या इफेक्ट होगा, किडनीज पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये हम उस ड्रग का अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स पे इफेक्ट भी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमल मॉडल्स, क्योंकि हमें एनिमल मॉडल्स यूज जब हम करते हैं तब हमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ठीक है अगर 200-500 अगर एनिमल्स की डेथ अगर हो भी जाती है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, वो ड्रग हम ऐसे डिसीज के लिए डेवलप कर रहे हैं कि सपोज वो डिसीज बहुत डेंजरस है उसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हो रही है ऑन ईयरली बेसिस, तो हम ऐसे ड्रग्स को यूज करने के लिए उनकी टेस्टिंग्स करने के लिए हम 200-400 एनिमल्स का सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्री क्लिनिकल रिसर्च और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो भी हमने पिछले 2-3 लेक्चर से इसको डिस्कस किया है। In this lecture, we are going to again discuss about another important topic, which is called as non-clinical studies. और अब इसके बारे में आपने नॉन क्लिनिकल स्टडीज के बारे में आप लोगों ने पिछले साल सुना होगा या फिर सेकेंड ईयर में आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि ये नॉन क्लिनिकल स्टडीज क्या है। तो जनरली हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, हम प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टडीज को डिस्कस करते हैं ओनली। मतलब क्या है कि हमने सपोज अगर ड्रग डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया तो ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में हम पहले क्या करते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, उसके बाद हम आईएनडी फाइल करते हैं, दैट इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। हम एफडीए को एप्लीकेशन करते हैं आईएनडी का, और अगर फिर हमें एनडीए सॉरी आईएनडी अगर हमारा अप्रूव होता है एफडीए से तो फिर हम क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए प्रोसीड करते हैं। लेकिन बीच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाता है, दैट इज अबाउट नॉन क्लिनिकल स्टडीज। तो ये प्री क्लिनिकल भी नहीं है और क्लिनिकल भी नहीं है। जनरली ये नॉन क्लिनिकल स्टडीज कुछ पार्ट इसका प्री क्लिनिकल में आता है और कुछ पार्ट इसका क्लिनिकल में आता है, इसीलिए हम इसको नॉन क्लिनिकल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये पैरेलल चलता है, प्री क्लिनिकल स्टडीज और क्लिनिकल स्टडीज के पैरेलल में नॉन क्लिनिकल स्टडीज चलती है। तो ये है क्या एग्जैक्टली तो इसके लिए एक डायग्राम है, उस डायग्राम से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि ये नॉन क्लिनिकल स्टडीज क्या है। ठीक, सो दिस इज द डायग्राम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ड्रग डिस्कवरी चल रही है, इनिशियली इतने पोर्शन में ड्रग डिस्कवरी चल रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके, यहाँ पर होगा प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स यहाँ पे होंगे, फिर यहाँ पे होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। ये फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है और बाद में अप्रूवल मिलके फेज 4 स्टार्ट होता है। तो नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स का अगर आप एरो देखोगे तो इसका कुछ पार्ट जो है ये ड्रग डिस्कवरी में आता है, कुछ पार्ट इसका प्री क्लिनिकल में आता है और कुछ पार्ट इसका फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स में आता है। तो ये नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स जो है, ये नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स पैरेलली चलते हैं अलग अलग एक्टिविटीज के साथ। ओके, ये अलग अलग एक्टिविटीज के साथ में चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं कि क्या क्या स्टडीज में करना पड़ता है। सो प्राइमरी फार्माकोडायनामिक्स। ओके, तो हम प्राइमरी फार्माकोडायनामिक्स करेंगे इसमें, फिर सेकेंडरी फार्माकोडायनामिक स्टडीज करेंगे। अब ये प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, इसके हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम जस्ट देखने वाले हैं कि यहाँ पे नॉन क्लिनिकल स्टडीज में कौन सी एक्टिविटीज हो रही है। तो पहला आपने देखा कि यहाँ पे प्राइमरी फार्माकोडायनामिक्स है, फिर सेकेंडरी फार्माकोडायनामिक्स है। अगेन मेटाबोलाइट्स जो है इसका हम डिस्कशन करेंगे कि उस ड्रग के क्या क्या मेटाबोलाइट्स बनेंगे इन एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। तो आप यहाँ पे देखो, अगर आप इस एरो को अगर एक्स्ट्रापोलेट करो तो
तो आप देख सकते हो कि जो मैंने सेक्शन बनाया है यहाँ पे, तो ये सेक्शन है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या क्या टेस्टिंग्स हो रही है विद रिस्पेक्ट टू नॉन क्लिनिकल स्टडीज़, और इससे आगे जो आएगा वो होगा सारा क्लिनिकल स्टडीज़ में। तो क्लिनिकल स्टडीज़ में नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज़ पैरेलल तरीके से क्या क्या हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो हम यहाँ पे मेटाबोलाइट्स फाइंड आउट करते हैं, एनिमल्स में क्या मेटाबोलाइट्स फॉर्म हो रहे हैं, ह्यूमन बींग्स में क्या क्या और कौन सी तरीके से और कितने कॉन्सेंट्रेशन में मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं। उसके बाद में प्रोटीन बाइंडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैंने बताया था कि अगर आप रिसर्च करोगे तो प्रोटीन बाइंडिंग का आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर ड्रग का प्रोटीन बाइंडिंग कैसा है, एक्सटेंसिव है, कम है, मॉडरेट है, क्या है, ओके। उसके बाद में आता है एनिमल एडीएमई। एनिमल एडीएमई मतलब क्या कि एनिमल्स में हम फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करते हैं। देन डीडीआई और टीडीआई, डीडीआई क्या है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ओके। और टीडीआई क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट इनहिबिशन। तो ये हम स्टडीज करते हैं डीडीआई और टीडीआई। उसके बाद में यहाँ पे है रोडेंट डीआरएफ। तो डीआरएफ क्या है, डोज रेंज फाइंडिंग, तब डोज रेंज क्या होगा। उसके बाद नॉन रोडेंट डीआरएफ, देन सब्सिक्वेंट रोडेंट आरडी टॉक्सिसिटी। आरडी मतलब रिपीट डोज, मतलब अगर हम रोडेंट्स में रिपीटेडली अगर हम डोज देते हैं तो उसका टॉक्सिसिटी प्रोफाइल क्या होगा, किस तरह से टॉक्सिसिटी आपको दिखेगी। देन सब अक्यूट नॉन रोडेंट रिपीटेड डोज टॉक्सिसिटी। देन एसपी, एसपी है सेफ्टी फार्माकोलॉजी, तो हम सेफ्टी फार्माकोलॉजी भी देखते हैं। देन जीनोटॉक्सिसिटी, जीनोटॉक्सिसिटी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये प्री क्लिनिकल स्टडीज में और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज की जाती है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में कुछ एनिमल एडीएमई का पार्ट आएगा। देन रैट QWBA, वो है क्वांटिटेटिव होल बॉडी ऑटो रेडियोग्राफी। देन मिल्क सिक्रीशन रोडेंट, मतलब मिल्क जो है सिक्रेट किया जा रहा है सपोज उस रोडेंट से, तो उसमें कितना ड्रग है, उसमें कोई ड्रग रिलीज हो रहा है कि नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगेन डीडीआई टीडीआई का कुछ पार्ट यहाँ पे आएगा, बायो एनालिटिक्स आएगा। देन सब क्रोनिक रोडेंट रिपीटेड डोज टॉक्सिसिटी, सब क्रॉनिक नॉन रोडेंट रिपीटेड डोज टॉक्सिसिटी, एम्ब्रियो फेटल डेवलपमेंट रोडेंट, मतलब एम्ब्रियो फेटल जो है, जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जो एक फिटस का डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है और उसके ऊपर कोई ड्रग का इफेक्ट है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। देन एम्ब्रियो फिटल डेवलपमेंट ऑफ नॉन रोडेंट। देन फर्टिलिटी ऑफ रैट, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कोई इफेक्ट है या नहीं है उस ड्रग का, वो हमें चेक करना पड़ेगा, कहाँ पे, रैट में। देन chronic subrodent repeated dose toxicity, chronic non-rodent repeated dose toxicity, then local tolerance, then abuse liability, peri-postnatal toxicity, and carcinogenicity. Okay, so all these activities to be performed along with the respective preclinical as well as clinical trials. तो हम जहाँ पे ये ऐसे ब्लॉक्स दिखाए गए हैं, these blocks are nothing but the non-clinical activities performed along with that of, किसके साथ होती है ये एक्टिविटीज, ये प्री क्लिनिकल या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ में होती है। ओके, सो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस डायग्राम से आप इमेजिन कर सकते हो और बता सकते हो कि कौन सी एक्टिविटीज हम करते हैं along with प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है, these non-clinical trials has to be carried out along with preclinical as well as phase 3 until phase 3 of clinical trials। तो clinical trials के साथ तो करना ही है, लेकिन clinical trials के साथ साथ जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स है उनके साथ भी हमें इसका टेस्टिंग्स करना है। कहाँ तक करोगे, फेज 3 जो है क्लिनिकल ट्रायल्स का, जो फेज 3 है वहां तक आपको नॉन क्लिनिकल स्टडीज करना पड़ेगा। यहाँ तक एक बार आपके ड्रग को अप्रूवल मिल जाता है तो वहां पे ये नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज
स्टॉप हो जाएगी. So this is just about the basic information of the non-clinical studies. So let's go back to the introduction point. We will have a short introduction about the non-clinical studies. So the non-clinical development phase primarily aims to identify which candidate therapy has the greatest probability of success, assess its safety, and build solid scientific foundations before transition to the clinical development phase. मतलब क्या है कि जो भी हमारी जो प्री क्लिनिकल स्टडीज है, उन प्री क्लिनिकल स्टडीज की जो फाइंडिंग्स है उनको कंफर्म करने के लिए और ओवरऑल प्री क्लिनिकल स्टडीज के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और सेफ्टी प्रूव करने के लिए, क्योंकि हम सेफ्टी प्रूव करते हैं, हम कार्सिनोजेनिसिटी करेंगे, हम उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट है वो चेक करेंगे, ऐसे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स पे उस ड्रग के क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं वो हम चेक करते हैं. Also, during the non-clinical development phase, the candidate compound should meet non-medical objectives, including defining the intellectual property rights and making enough medicinal product available for clinical trials. So that means what? Which are the basic objectives of non-clinical studies are like defining the intellectual property rights. That means if we want to file a patent, so the process of collecting data should be carried out with respect to non-clinical studies. As well as we have to make enough medicinal product available for clinical trials. If we want to go for the clinical trials, enough amount of drug should be available. In fact, that drug should be converted into appropriate dosage form. And that dosage form has to be decided on the basis of the results obtained in the animals. How was the ADME pattern? What was the bioavailability? So by considering all these pharmacokinetics, we have to decide about the dosage form. That means how to convert that drug into suitable dosage form. Then the non-clinical development of a medicine is complex and regulatory driven. Then relevance of non-clinical studies in drug development. So what are the basic goals? So identify the pharmacological properties like pharmacodynamics. We have already seen the diagram in which there was like primary pharmacodynamics, secondary pharmacodynamics, then PK, that is pharmacokinetics. In that particularly we have to find out about the amount of metabolites and kind of metabolites are being generated. So whatever the active ingredient is there, whatever the drug is available, that drug is definitely going to be converted into metabolite. Why? Because after the completion of therapeutic effect, that drug has to be removed from the body. That drug is no longer needed to our body, and that drug should be converted into such form that could be easily excreted out of the body. So therefore the metabolism study is also important. Then comparative physiology, that means extrapolation of animal data to humans. It is much like the calculation that we perform in the practicals. Now we have a dose of that drug for human beings. Now how can we convert that human dose into animal dose? It is just like that. Whatever the study or the outcomes we have got during the animal studies, how can we convert the approximation of this animal data to human beings? So all these things should be coming under the pharmacological properties of the drug. Then understand the toxicological profile, which is very important because we have to go for safety analysis first.
So uh, establish a safe initial dose level of the first human exposure. That means how much drug should be given initially to the human beings, which may not be effective but must be effective. Sorry, must be safe. May not be effective, but it must be safe. So we have to decide the amount of initial dose for the first human exposure in the phase 1 of clinical trials. Second point, identify parameters for clinical monitoring of potential adverse effects. So, what could be the adverse effects? The basic knowledge of adverse effects related with the category of that drug should be understood. That means, suppose if we have uh, anti-hyperlipidemic drugs, okay, and anti-hyperlipidemic class, so we are going to develop another drug which belong to the anti-hyperlipidemic drug class. So what we have to understand here, what are the common adverse effects related to the basic class, that means anti-hyperlipidemic drugs. So whether those adverse effects are being presented by the new drug also, that we have to identify, and also the new adverse effects which are not shown by the category or the class of drugs from which this drug have been developed, that also we have to identify. And finally, spatial toxicity, for example genotoxicity, carcinogenicity, and reproduction toxicity like effects we have to also study in the non-clinical studies. Then from this graph, you can just see the graph of relevance of data with respect to time, which we have plotted here. So as soon as the marketing authorization is obtained, the non-clinical data and its importance goes on declining. It goes on declining. But it is very important as we go on initially with the clinical data. You can see here, the course of clinical data is like this, and the importance of this non-clinical study is much higher in the initial phases of clinical trials. Okay, so when we start the phase 1 of clinical trials, so the non-clinical trials and its importance is very high in the initial stages of clinical trials, especially in phase 1 of clinical trials. As we go on conducting the phase 2 and phase 3, say for example this is up to phase 2 and this is phase 3, okay, so these phase 2 as well as phase 3 studies also comprise of non-clinical data. But as soon as this drug gets market authorization, the importance of the non-clinical studies goes on declining. So this is the relevance of non-clinical studies in medicines development. Again, we have not shown anything with respect to preclinical trials. So when we study about the preclinical trials, it is equally important to study about non-clinical trials also. Okay, therefore the graph is not shown here. But imagine if we have a graph of preclinical trials, so that graph will be like this and it should overlap, because the preclinical trials and non-clinical studies are equally important. And say for example this is relevance of data again on the y-axis, and on x-axis we have time. So we have these two lines,
First line represents about the preclinical trials and second line represents non-clinical trials. So these both lines should overlap, and it suggests that the preclinical trials and non-clinical trials should be run together, and there is no significant amount of difference in between these two studies. But when we consider about the non-clinical studies with respect to clinical trials, so in phase 1 of clinical trials, the non-clinical studies are most important. But as we go on with the clinical trials like phase 2 and phase 3, the non-clinical trials or non-clinical data and its importance goes on declining continuously. Eventually, at one point, when the drug gets market authorization, there is no requirement to carry out the non-clinical studies. But some companies may consider to carry out non-clinical studies even after getting market authorization. So it is about the individual decision of that particular company. But these non-clinical studies are conducted until the phase 3 of clinical trials. Imagine this about phase 2, okay, and imagine about this is like phase 3. Okay, so this is the relevance of non-clinical studies in medicines development. Again, these non-clinical studies are important to be included in the common technical document. This common technical document will discuss separately. So you can just imagine some part of these non-clinical studies come under the module 2 of the common technical document, like non-clinical written and tabulated summaries and non-clinical overview in the points like 2.4 and 2.6. Again, it have to be considered in module 4 like non-clinical study reports in point 4.0. Okay, therefore some non-clinical sections are included in the common technical document. And this common technical document, what is it? We will discuss this CTD in some other lecture. Okay. This point we have already discussed previously. So in practice, non-clinical studies start during the discovery phase and continue and sometimes beyond approval. So this sentence gives an idea about when to start with the non-clinical studies and when to stop it. So these non-clinical studies may start along with the drug discovery phase, and it may continue until the approval, and sometimes even after getting an approval to be marketed. Again, non-clinical development covers a number of domains, from the biological research underpinning a compound's mode of action through its disposition in the body, like pharmacokinetics, and safety assessment like toxicology. That means this non-clinical study can be dedicated for the discussion about the pharmacokinetics as well as toxicology. Then for small molecules, early studies including in silico predictions and in vitro in vivo screens provide a valuable feedback for compound optimization during the discovery phase. That means how can we optimize? If there is a problem with pharmacokinetics, how can we increase the absorption of that particular drug? So it can be judged very initially with the help of non-clinical studies. Then they also form the basis for managerial decisions to advance molecules into good laboratory practices, safety assessments. And finally, GLP studies, if successful,
enable the conduct of first human trials. So therefore, these non-clinical studies are very important and should be run along with the drug discovery phase, preclinical phase, and after that, clinical trials as well. And some companies may consider the non-clinical trials beyond the approval process also. So this is the importance of non-clinical studies.